हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। आज हम बात करेंगे कल की प्रीवियस सीरीज को। वी विल मूव फर्दर। तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था दैट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी बाइफरगेटेड इनटू टू वेज। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वन, on the basis of magnitude and direction. One, on the basis of magnitude and direction, physical quantity can be said to be either scalar or vector, and another one is on the basis of dependency. And on the basis of dependency, we have said that physical quantity may be either fundamental or derived. So there is limitation on fundamental quantities, that the fundamental quantities are those which are defined and they are only 7 in number, and with the help of those 7 quantities we can derive infinite number of other derived physical quantities. And the other bifurcation of physical quantity was on the basis of magnitude and direction. So on the basis of magnitude and direction, physical quantities were of two types, scalar and vectors. Now we will move further. So in physics, in mechanics, if we talk in mechanics or beyond mechanics, either you will talk of waves or electrostatics or magnetism, everywhere you will have a basic requirement of knowledge of vector. हर एक जगह पे, चाहे आप मैकेनिक्स की बात करें या वेव्स की बात करें या आप वेव ऑप्टिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, एवरीवेयर you should have the knowledge, you should have the basic knowledge of vectors. आपको वेक्टर्स का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर ईच, चाहे देयर इज ओनली सम टॉपिक्स इन द फिजिक्स जहां पे आप वेक्टर के बिना यू कैन डील विदाउट वेक्टर, बट ईच कॉन्सेप्ट इन मैकेनिक्स में तो वेक्टर का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो वी विल टॉक इनिशियली, वी विल टॉक ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स की बात करेंगे। तो द क्वांटिटीज विच कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दे आर डिफाइंड एज vectors. So now we will talk of vectors. So today we will start our discussion about vectors. So what are vectors? Vectors are those quantities. I am not talking of physical quantity. मैं केवल physics की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कहीं भी बात कर रहे हैं. So what are vectors? Vectors are those quantities which contains both magnitude. Vectors are those quantities which contains both magnitude and direction. So those quantities which contains both magnitude and direction are defined by vectors, are defined as vectors. So vectors are those quantities which contains magnitude and direction. Now to represent the direction, we should have some notation in vectors, and to represent the magnitude we should have some notation in vectors. So vectors are represented by an arrow. वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। वेक्टर को हम एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द एरो, दिस इज डिफाइंड एज द हेड ऑफ द एरो। इसे हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द एरो, and this is defined as tail of the arrow. So the direction of the vector is defined by head of the arrow. तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है that is defined by head of the arrow, while there will be some length of this arrow. इस एरो का कुछ ना कुछ एक लेंथ भी होगा। This arrow will have certain length. इस एरो की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। So the length of the arrow defines the magnitude. The direction of the arrow is defined by a
द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज डिफाइंड बाय द हेड ऑफ द एरो। जो एरो का हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एरो की लेंथ होगी दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। तो जो एरो की लेंथ होगी, द लेंथ डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वेक्टर का इस एरो का लेंथ होगा दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, व्हाइल द हेड ऑफ द वेक्टर विल डिफाइन द डायरेक्शन। जो वेक्टर का हेड होगा वो क्या डिफाइन करेगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन को। जो इस एरो का हेड होगा वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। once this arrow is fixed, एक बार ये एरो वेक्टर का फिक्स हो गया, नाउ this becomes a fixed vector। ये एक फिक्स्ड वेक्टर हो गया। नाउ वी कैन नॉट रोटेट, हम क्योंकि वेक्टर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वेक्टर कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और बाय चेंजिंग बोथ। तो वेक्टर can be changed by changing the magnitude or changing the direction or changing both. So if the vector needs not to be changed, neither we can extract, neither we can elongate this arrow, ना तो हम इस एरो को elongate कर सकते हैं, nor we can compress this arrow, इस एरो को हम compress भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया magnitude में change, neither we can elongate this arrow nor we can compress this arrow. So this is the change which can occur in the magnitude, because हमने क्या बात की, the length of this arrow defines the magnitude. So the change in magnitude can be done by changing the length of this arrow. इस एरो की लेंथ को चेंज करके हम इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। So if the length of this arrow is fixed, means magnitude will be fixed. Now the next possible change in vector can be change in direction. So the vector's direction will be fixed if the direction of this arrow, if the head of this arrow remains fixed. If the direction of the head of the arrow remains fixed, so the vector's direction will also be fixed. So vector's direction will be fixed if the direction of this arrow does not change, if the direction of the head of this arrow does not change. तो इस एरो की डायरेक्शन, इस हेड की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय रोटेटिंग द वेक्टर। इस वेक्टर को अगर हम रोटेट करें तो इस हेड का डायरेक्शन चेंज होगा। तो इफ द वेक्टर नीड्स टू बी फिक्स, अगर वेक्टर को फिक्स रहना है तो ना तो हम वेक्टर को इलोंगेट कर सकते हैं, ना कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ना ही वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से, ए वेक्टर कैन बी चेंज्ड, a vector can be changed, a vector can be changed by changing its magnitude और मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय इलोंगेटिंग और कॉम्प्रेसिंग, बाय इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। और बाय वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय रोटेटिंग द वेक्टर, बाय रोटेटिंग द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकते हैं, वेक्टर को इलोंगेट करके या कंप्रेस करके, और वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय रोटेटिंग द वेक्टर। तो वी कैन से इफ देयर इज ए वेक्टर तो इट विल रिमेन्स फिक्स। ये वेक्टर फिक्स रहेगा कब, जब ना तो इसके हम इलोंगेट करें और ना ही इसे क्या करें, कंप्रेस करें। दिस इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड। And one more thing also we cannot do, we cannot rotate this vector। हम इस वेक्टर को रोटेट भी नहीं कर सकते हैं,
because once we'll rotate this vector, the direction of this vector will change. But what is possible? लेकिन क्या possible है? If we'll take this vector and if we'll move this vector in its own direction, अगर इस वेक्टर को उसी की डायरेक्शन में मूव करें तो इज द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है? तो आई विल ड्रॉ इट दिस अगेन. लेट देयर इज अ वेक्टर, let there is a vector, let any vector, let this is a vector. Now if we'll take the same vector, now this vector can be changed by changing its magnitude, either elongating or compressing, or by changing its direction. इस वेक्टर को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, by elongating or compressing, that will be the change in magnitude, or by rotating this vector, that will change the direction. But so this is not possible. But what we can do, if we'll take this vector, now if we'll rotate, if we'll take a vector, now if this vector is being moved in the same direction, अगर वेक्टर को हम उसी की डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें, if the vector is being moved in the direction parallel to its own direction, अगर वेक्टर को उसकी लेंथ के पैरेलल मूव करें, तो is the magnitude of the vector is changing? No, we are not elongating or compressing. हम वेक्टर को ना तो elongate कर रहे हैं ना ही compress कर रहे हैं. Nor the direction of vector is changing. Neither we are rotating the vector in anti-clockwise nor clockwise. So a vector can be moved along its direction. किसी वेक्टर को अगर हम उसकी डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं, if a vector is being moved parallel to its own direction, there will be no change in the vector. तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा. So a vector can be moved parallel to its own direction. What is other possibilities? Because we have neither changed the magnitude nor changed the direction. What is the other possibility? Now other possibility is, if a vector is being moved, perpendicular to its direction, if a vector is being moved perpendicular to its direction, अगर वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें, it will move a vector perpendicular to its own direction. So is the magnitude of the vector is changing? Is the magnitude of vector is changing? No, because we have neither elongated nor compressed it. Is the direction of the vector has changed? So have we moved the vector in anti-clockwise or clockwise? No. So a vector can be moved, a vector can also be moved perpendicular to its direction. एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी मूव कर सकते हैं. So a vector can be moved perpendicular to its own direction as well. So what we can say ultimately, if a vector is being moved parallel to its own direction as well as perpendicular to its own direction, there will be no change in the vector. So you can write, if this is a vector A, this vector can be moved parallel to its own direction as well as perpendicular to its own direction. So we can say a vector can be moved, a vector can be moved parallel to its direction as well as perpendicular to its direction without being disturbed. एक वेक्टर को बिना डिस्टर्ब किए उसकी डायरेक्शन के पैरेलल भी मूव कर सकते हैं और परपेंडिकुलर भी मूव कर सकते हैं. फाइन. So this is the case that a vector can be moved parallel to its own direction
as well as perpendicular to its own direction. Now we will define resolution of a vector. Next is resolution of a vector. Resolution means to break a vector. A vector can also be resolved into two orthogonal components. What is orthogonal? Means mutually perpendicular. So if there is a vector, let this is a vector A. Let this is a vector A. Now this vector can be resolved. This vector can be bifurcated into two mutually perpendicular vectors. इस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या कर सकते हैं आप? डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. Resolution of a vector into two orthogonal vectors. So there is a vector. This vector is being resolved one along the horizontal direction. And अब अगर horizontal में एक हमने resolution कर लिया, so what is the other mutually perpendicular resolution possible? That is along the vertical. So any vector can be resolved into two orthogonal vectors. एक वेक्टर को हम दो ऑर्थोगोनल वेक्टर में, because we are talking of 2D plane, हम अभी 2D plane की बात कर रहे हैं, so we all talk of two dimensional, only two resolution of vector. Otherwise in 3D it can be resolved into three component if we'll know the direction cosines. But if we'll know a vector in 2D plane, so a vector in 2D can be resolved into two orthogonal vectors. दो orthogonal vectors में एक vector को हम resolve कर सकते हैं. So let this vector is forming an angle theta from the horizontal. मान लिया ये वेक्टर horizontal से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. If this vector is being resolved into two mutually perpendicular vector, so let this vector is having horizontal component of, इस वेक्टर का मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज लेट दिस इज एक्स एक्सिस. इसको अगर एक्स एक्सिस मान लिया, सो लेट दिस इज ax, and it will have its vertical component, if it is having its vertical component as ay, let this vector has its horizontal resolution as ax and vertical resolution as ay. Now if we'll connect them, because this angle is 90, I have talked about orthogonal vectors. If this angle is 90, this will completely form a rectangle. If we'll name this let P, Q, R, S. So if angle SPQ is 90, all the other will also be 90. Right? So this will form a PQRS will form a rectangle. PQRS will be a rectangle. Now if this PQRS will be a rectangle, we can write PQRS is a rectangle, because it is a quadrilateral, and in quadrilateral, if one side is 9, if one angle is 90, it will certainly turns out to be a rectangle, or you can say two angles are 90. Now if this is a rectangle, we can write that side PS will be equal to side QR, because in rectangle the front side will be equal. Now if in this rectangle, since all angles are 90 degree, so PQR
PQR will be a right angled triangle. Right angled triangle. If PQR is a right angle triangle, we can apply very basic laws of trigonometry over here. यहाँ पे हम बहुत basic trigonometry के law लगा सकते हैं. So what are those laws? So we can write in this right angle triangle PQR, we can write sin theta as well as cos theta. Sine of angle we can apply as well as cos of angle we can apply. So we can write sine of the angle theta. Ab sine of the angle will be perpendicular upon hypotenuse. So what is perpendicular? RQ upon what is hypotenuse? PR. And what is RQ or QR? That is equal to PS. And PS is nothing but vertical component, vertical resolution of this vector. So AY will be the magnitude. AY will be equal to PS, or we can write this as PS upon PR. What is PR? PR will be the magnitude of vector A, or we can say vector A, magnitude of vector A. And what is PS? PS is nothing but AY. So what we can write from here, that the vertical resolution of this vector AY comes out to be A sin theta. The vertical resolution of this vector AY comes out to be A sin theta. Similarly, if we'll write the next trigonometrical function, cos theta, write cos theta as, what you can write cos theta? We have done very basic trigonometry. This is very basic trigonometry, that in this, if this is a right angle triangle given, if this is a right angle triangle and this angle is theta, if there is a right angle triangle, let PQR, अगर कोई right angle triangle PQR आपको given है, तो and this angle RPQ is theta, if angle RPQ is equal to theta, so in front of theta, if this is a right angle triangle, so in front of angle theta, the side is known as perpendicular. थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट इज हाइपोटेनस, एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस. सो वी हैव बेसिकली three trigonometrical functions and there are three reciprocals, but we will talk of three. What is sin theta? Sin theta is defined as, sin of theta is defined as theta के सामने perpendicular upon hypotenuse. So we can write this as QR upon PR. Similarly, cos theta is defined as base upon hypotenuse, that is PQ upon PR. And if we'll divide sin to cos, we will get tan theta, which is nothing but sin theta upon cos theta. If we'll divide this, this comes out to be perpendicular upon base, that is QR upon PQ. The same we have applied over here. So what we can write cos theta as base upon hypotenuse. So what is base? Base is PQ upon what is hypotenuse? PR. And what is PQ? PQ is nothing but X upon what is PR, hypotenuse? Okay. So from here what we can write, that the horizontal component AX can be written as A cos theta. So this complete vector A can be resolved into two components, one along the horizontal, two orthogonal component, one along the horizontal, one along an angle theta and another perpendicular to the resolved vector. तो किसी भी वेक्टर को any vector A can be resolved
into टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, किसी भी एक वेक्टर ए को हम थीटा एंगल पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. So one vector which will be along the angle theta. So one of the vector, if let this vector is having magnitude A, so the vector which will be resolved along angle theta is written as that this is AX, x axis अगर मान रखा है, so that is A cos theta, and the vector which will be resolved perpendicular to the first one, that is AY, will be equal to A sin theta. How we will remember this? ये वाला कंपोनेंट ये थीटा के पास में है, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज नियर टू थीटा. ये वाला कंपोनेंट थीटा के पास है, तो मल्टीप्लाई बाई कॉस, पास कॉस. तो x that the horizontal component or the component of any vector at an angle theta is defined as the magnitude of that component multiplied by the cos theta, and the remaining orthogonal component will be a magnitude of the vector into sin theta. So today we have discussed that a vector having notation, a vector is having notation of an arrow. एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. So a vector is being denoted by an arrow. The length of that arrow defines the magnitude of that vector, while the direction is defined by head of the arrow. If we'll keep the length of a vector is fixed, अगर हम वेक्टर की लेंथ को फिक्स रखें, अगर हम वेक्टर की लेंथ को फिक्स रखें तो उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, और अगर वेक्टर के हेड के डायरेक्शन को फिक्स रखें तो क्या फिक्स रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल रिमेन्स फिक्स्ड. So we have talked a vector can be changed by changing its magnitude, that is either by elongating or compression, or in the direction change can be by rotation of vector. So if a vector is being neither elongated nor rotated, if a vector is being neither elongated nor compressed or nor rotated, then the vector will remain fixed. So what movement of a vector is possible? Vector के क्या movement possible है? So a vector can be moved parallel to its own direction as well as perpendicular to its own direction. एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के पैरेलल भी मूव करा सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन के अलोंग भी मूव करा सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी मूव करा सकते हैं. इफ विल मेक दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर विल नॉट चेंज. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. So a vector can be resolved into two orthogonal component in two dimension. A vector can be resolved into two orthogonal component. So if a vector A is given, this can be resolved into two orthogonal mutually perpendicular. Orthogonal means two mutually perpendicular component. The component that will be along angle theta will be A cos theta, while the component that will be perpendicular to the first component will be A sin theta. So that is all for the first series. Now we will discuss beyond this in the next class, in which we will discuss about types of vector, and after that we will move beyond that. So this is all for today. Thank you everyone.